Hello, good morning, my dear children. I, Somyakanpati, your English teacher, warmly welcome you all to today's online YouTube live English class. Children, for some days we are revising our syllabus, those that were completed before. You know, in our first class, we discussed our first chapter, Run, and that was revised by our teacher and you have watched them. Now we shall go to the next chapter and we shall revise it. Children, these live classes are only for the purpose of revision. Okay? Before they were all telecasted, you have watched them in detail, but now for the purpose of exam we are revising them, isn't it? So that's why always have your pen, paper ready with you, because nowadays we shall give a number of worksheets for your practice. We shall discuss and give your practice. You will do in your classwork, later you will do in your homework, submit them with your teachers, make them corrected and ready for your exam. So सेति पई पिला माने सब बेले पेन पेपर रेडी करी पाख रखिथिबो, खाली नाही कि बस के सुनी जिबा बस 30 मिनिट्स स्पेंड कर दबा. जहाँ भी किछि अछि ताकू नोट डाउन करिबा, कॉपी रे लिखिबा, होमवर्क सबमिट करिबा. अच्छा पिले, so now I again welcome you today's English class. Now we shall see what is the topic today. You know, there are different platforms for our online classes, and they are, first one is your radio Pathshala program, isn't it? We see it, watch it and listen it in our radio, that is radio Pathshala program. Besides, there is Diksha platform for you, in which you can get all the courses of studies recorded there, topics are recorded there, you can watch them. Another one is your Madhu app. There is also you find the topics for you, and at the same time there is Doordarshan Odia, there is your Shiksha Darpan program, and besides all these things there is your YouTube live streaming classes. So see, Radio Pathshala, Diksha, Madhu app, Shiksha Darpan and your YouTube live classes. So they are the different platforms for you. Now you can see the time for that. For YouTube live classes, you know our time is 9 AM to 10:40 AM, and for Shiksha Darpan program it is 1:30 to 3 PM, and for Radio Pathshala as usual 11 to 12. And all these programs are telecasted from Monday to Friday. So watch them, enjoy them, like them, share and subscribe them. Dear children, this is an online time schedule for you for our elementary section, class 1 to class 8, Monday to Friday. Okay, it is given very nicely when to watch or listen what. So date wise it is written, so keep it in mind. You can take the screenshot if possible and follow it minutely. Now children, today's topic is the jackal and the rooster. There are two parts. We shall complete it today, the first part of your lesson. This is the second lesson of your English reader book, and the chapter is the jackal and the rooster. You have read it. Today we shall briefly go through the text, recapitulate it and go for comprehending questions, listening, speaking activities. So now quickly go through the text, that is SGP1, that we want to cover today. Read with me. There was a very big and handsome rooster. He looked like a king with its beautiful red crown. He got up very early in the morning, sat on a high place and sang non-stop cuckoo-doodle-doo, cuckoo-doodle-doo. He knew
that his song was much better than the songs of other roosters in his locality. But he wanted to make his song still better, louder and clearer. But how to do this is his problem. So it was a problem till a jackal suggested a way out. The jackal saw the rooster singing every day early in the morning, but it sang keeping his eyes open. If he would try to catch the rooster would fly away to the tree. This was what happened the other day when he tried to catch the rooster. So he came to the rooster and said, "Oh, great, handsome, crowing like rooster, your song will be really nice if you sing closing your eyes." So that is your SGP 1. You read it, you know it also, and we very nicely presented it pictorially in your previous classes. You can watch them also. Now, what do you get from this passage? What are the important points that will keep in mind for the purpose of exam? Now see the brief point notes from para 1 and para 2, that is covering the SGP 1. First one is, there was a big and handsome rooster. That is number 1 point. Okay, there was a dash, a big and handsome rooster. Number 1. Number 2, he had a beautiful red crown like a king. He also felt like a king. It means तार गोटे ब्यूटीफुल रेड क्राउन थिला कहा भलिया किंग भलिया, and he also felt like a king. That is number 2. Go for number 3. Every day he sang early in the morning. Every day he sang early in the morning though he knew that his song was much better. He wanted to make it still better, louder and clearer. He knew it, his song was better, but still he wanted to make it better, louder and clearer. We shall go for the next point. But what was a problem? But that was a problem for him. He wanted to make it clearer, louder, better, but how to do that? That was a problem for him. So you may get a question, what was the problem with the rooster? You will say then that was the problem. Then what happened? A jackal suggested a way out. In the meantime, there appeared another character. Who was the second character? That was the jackal. And the jackal suggested a way out. Way out means से problem रे गोटे solution तांको से बतेला, गोटे बाटर बाहर करा केमिति ता voice को से louder, clearer और better करी पारिबो. The jackal saw him singing every day early in the morning, sitting on a high place. नहीं गोटे हाई प्लेस बसी सबुदिन प्रैक्टिस करूची, रियाज करूची ना. The jackal saw him. Then what did the jackal do? He thought of a plan. He thought of a plan. He hatched a plan. He thought a plan how to execute his plan. That's why he thought so that he could catch him. पिले आमे जदि किछि भाबी कि न करिबा ताले प्लान सक्सेसफुल हे परिबो नाही. सेथि पई जैकल बहुत चालाक थिला तो शिशुटु कोन कला ही थॉट ऑफ ए प्लान सो दैट ही कुड कैच हिम. द जैकल केम नियर हिम एंड प्रेज्ड हिम. ताको बहुत फोस्टर कला, ताको प्रेज कला, बहुत टेकी टुकाई ताको कहिला. कोन कहिला ना विथ हाई साउंडिंग वर्ड्स, ओ हैंडसम, ओ किंग लाइक रूस्टर, एमिति हाई साउंडिंग वर्ड रे ताको बहुत प्रेज कला. He seduced him and tried to befool him. ताकू एमिति करी seduce कर दला, ता टैकल कला, ता अगली क्लच भीतर को नहीं आसला पिले and befool him. ताकू बोका बनेबा को चेष्टा कला एवं सक्सेसफुल मध्य हेयला. कोन कहिला से? He advised him to sing closing his eyes. कला ए आखी खोला करी कोन गाउछु के रे? आखी बंद करी गा तो स्वर आहुरी सुंदर हबो. He advised him to sing closing his eyes so that his song would be really nice. Then what happened we shall cover in our next class. But today there is a worksheet for you. First worksheet. You have read it, gone through the brief points. Now just remember what is this picture about.
व्हाट इज इट इट इज हुज पिक्चर इट इज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डज इट लुक लाइक ये केमी देखा होची आमे जो पैसेजटा पढ़िले से पैसेज से केमी देखा होची डिस्क्राइब करा हैची व्हाट इज दिस जोठी कि एरो मार्क दिया जाइछि सेटा तार कोन रेटटा कोन तार व्हाट डज इट फील लाइक से केमती अनुभव करूची एबे तार आंसर भी देखि दियो फर्स्ट क्वेश्चन थिला व्हाट वाज इट अ वेरी बिग एंड हैंडसम रूस्टर व्हाट इज इट लाइक a king what is that the red crown and what does he felt like a king isn't it now you can keep this worksheet with you and you can do it of your own now we shall move to the worksheet number 2 in worksheet number 2 there are some words okay some words are there crown locality louder suggested catch some words are taken here some pictures are there you have to match crown means what a royal princely headdress जोटा हेड रे रखा जाए मुकुट नेबर मीन्स लोकालिटी नेबरहुड रोटे पिक्चर दिया जाइछि लाउडर रो पिक्चर अछि सजेस्टेड रो पिक्चर अछि गोटे कैच रो पिक्चर अछि देखो दीटा हाथ अछि ना तुमे निजे से गुडी को मैच करिवो मु करिवेनी ए वर्कशीट 2 तुम मानक पई हैला तुमे स्क्रीनशॉट नै जाई परिबो एवं आकु परे करी टीचर्स पाखु देखैबो now go for the worksheet number 3 there are some verbs here and the present form of the verb and their past form पिले ए प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब को मध्य हमें बेस फॉर्म बोली कहि थाउ एठी बेस फॉर्म दिया जाइछि एवं सेमानकर पास्ट फॉर्म भी दिया जाइछि नॉर्मली वर्ब कहले हमें कोन बुझू हमें साधारणतः बुझू वर्ब माने एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स इजंट इट एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड verbs ता छड़ा भी पिले स्टेट वर्ड्स को मध्य वर्ब कहा जाए पोजीशन वर्ड्स को मध्य वर्ब कहा जाए देखो फर्स्ट बीट तुम लिखि दिया है एक्शन वर्ड्स सेकंड बीट लिखा है स्टेट वर्ड्स थर्ड बीट लिखा है पोजीशन वर्ड्स ये तीन प्रकार वर्ड्स को आमे वर्ब कहि परिबा एक्शन वर्ड्स माने जेमति कि प्ले खेलिबा सिंग गाइबा डांस नाचिबा एगुडी सब एक्शन वर्ड किंतु पिले आई एम ए टीचर आई एम कोन एक्शन he is my friend is कोन गुड एक्शन ना that is my house this is my school एटा कोन गुड एक्शन ना एगुडा को स्टेट बा कंडीशन तेनु सेति पई स्टेट वर्ड्स मध्ये हमें वर्ब कहि परिबा तापरे पोजीशन वर्ड्स आई हैव ए बुक हैव कोन गुटे एक्शन हैव कोन गुटे स्टेट ना हैव माने अछि पोजीशन को बुझौछि तेनु ब्रॉडली पिले ए तीनटा कथा मन रखिबा एक्शन वर्ड्स स्टेट वर्ड्स एंड पोजीशन वर्ड्स ए तीनटा को हमें वर्ब बोली कहिबा अच्छा ए वर्ब माने पुनी केते प्रकार अछि जेमति कि रेगुलर वर्ब बा वीक वर्ब सेमति इरेगुलर वर्ब बा स्ट्रांग वर्ब किछि वर्ब अछन रेगुलर वर्ब ताको विशेष कष्ट नै मन रखिया पई आराम से मन रखि परिबा प्ले प्लेड प्लेड डांस डांस्ड डांस्ड क्लैप क्लैप्ड क्लैप्ड laugh laughed laughed तार सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म पिले समान तेन तार जदि केवल हमें बेस फॉर्मटा मन रख दबा प्रेजेंट फॉर्मटा मन रख दबा आ सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लर्न करिवार आवश्यकता नाही सेगमान को हमें रेगुलर बा वीक वर्ब बोली कहि थाउ किंतु पिले किछि वर्ब अछंती जो गुडी का इरेगुलर यू हैव टू लर्न देम यू हैव टू लर्न इट बाय योर हार्ट अदरवाइज यू विल फॉरगेट देम फॉर एग्जांपल go went gone नहीं come came come do did done sing sang song run ran run एगुडी सब पिले देखो चेंज होउची आर सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म पिले समान नुहे आकु हमको लर्न करिया पड़ियो वी हैव टू रिमेंबर देम सो दे आर कॉल्ड द स्ट्रांग और इरेगुलर verbs then if you think about finite verbs means those verbs they carry tense suppose I am a teacher it is in present tense because am is in present form it was a nice movie ए was डाउची past form ताले पिले be was और am ए गुडी को सब हमरा finite verb रे जाए non finite को गुडी को ना those who don't carry tense सेमान tense कैरी करंतनी जेमिति कि I am teaching now एटा present tense रे अछि am प्रेजेंट टेंस किंतु टीचिंग टा टेंस करी करू नाही ताको पास्ट टेंस रे कले भी आई वाज टीचिंग यस्टरडे आम टा वाज हे गला
किंतु टीचिंग टा चेंज हैला नहीं कहीं ना टीचिंग टा नॉन फाइनाइट तेणु से भली नॉन फाइनाइट्स आमर विभिन्न प्रकार भर्स अच्छा तुम्हें बड़ हेल्ले से विषय पढ़ जेराउंड पढ़ इनफिनिटिव्स विषय पढ़ पार्टिसिपल्स विषय पढ़ एगुड़िक सब नॉन फाइनाइट भर्ब कहुए दे डोंट कैरी टेंस तापर आसला ट्रांजिटिव भर्ब इनट्रांजिटिव भर्ब पिले ट्रांजिटिव भर्ब माने जो भर्ब गुड़िक ऑब्जेक्ट थाए बा जो माने ऑब्जेक्ट कैरी करती आई प्ले फुटबॉल आई लाइक स्वीट्स आई ईट बानाना तो एगुड़िक सब पिले देख गोटे ऑब्जेक्ट अच्छे एसबीओ पैटर्न सब्जेक्ट भर्ब पर ऑब्जेक्ट आसुची भर्ब गुड़िक पिले ऑब्जेक्ट कैरी करती जो भर्ब गुड़िक ऑब्जेक्ट नियंती बा ऑब्जेक्ट थाए से भर्ब मान को आम ट्रांजिटिव भर्ब बोली कहि परिबा सेमिति जो भर्ब मान ऑब्जेक्ट न थाए ताको आम कह इनट्रांजिटिव फॉर एग्जांपल बर्ड्स फ्लाई शी स्माइल्स एट मी सेठी ही स्लीप्स यो स्लीप स्माइल्स फ्लाइज एगुड़िक किसी दरकार पड़ूना कौन ऑब्जेक्ट तेणु एगुड़िक आम इनट्रांजिटिव भर्ब कहू पिले जो गुड़िक ट्रांजिटिव भर्ब नुहे से गुड़िक तुमको जिते पासिव करने पड़ो वॉइस चेंज करने पड़ो एक्टिव रु पासिव से तुम आवश्यक हुए तेणु तुम जानापी पड़ो ट्रांजिटिव भर्ब को गुड़िक इनट्रांजिटिव भर्ब को गुड़िक फाइनाइट किए नॉन फाइनाइट किए स्ट्रॉन्ग भर्ब किए वीक भर्ब किए एगुड़िक तुमको अधिक इनफॉरमेशन दिगला आपको सब समय सुविधा देखी टीचर सहित कंसल्ट करी पचारि बुझी मन रख बड़ क्लास तुम बहुत दरकार हम अच्छा एठी हमर पाई वर्कशीट कोन दिया छि पिले आमु किछि बेस फॉर्म रो पास्ट फॉर्म दिया जाय छि तमे देखो फर्स्ट दिया छि इज रो पास्ट फॉर्म कोन वाज व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ बा पास्ट फॉर्म ऑफ लुक्ड फील फेल्ट गेट अप सीट सैट हैपेंड ट्राइड कम केम नो न्यू वांटेड ना किंतु पिले तुम कि वर्क भी अच्छी देख से ब्लू बॉक्स रे कौन अच्छी राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ ये गुड़िक मुझे तुमको कहबी यू हैव टू डू देम सो राइट देम डाउन व्हाट आर द वर्ड्स एंड हाउ टू मेक देम पास्ट कौन कौन वर्ब सेठी अच्छी क्लोज सीइंग कैच सी मेक सजेस्ट कीप you have to write the past form of these verbs पिले ए verb रो बहुत फॉर्म अच्छी ए बेस फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म पास्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल को थर्ड फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल को फोर्थ फॉर्म तापर सिंपल प्रेजेंट पाई फिफ्थ फॉर्म एमिति आमे लर्न करि परिबा मु तुम गोटे उदाहरण दे परिबी गो फर्स्ट फॉर्म वेंट सेकंड फॉर्म गॉन थर्ड फॉर्म गोइंग फोर्थ फॉर्म तो एमिति प्ले प्लेड प्लेइंग सीट सैट सीटिंग डांस डांसिंग सिंग सॉन्ग सिंगिंग रन रनिंग एमती आमे घरे टिके ताकू प्रैक्टिस करिबा और लर्न करिबा सो दिस इज योर वर्कशीट नंबर 3 नेक्स्ट गो फॉर वर्कशीट नंबर 4 यू सी इट इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड एटी बहुत गैप अच्छी ए गैप गुड़िक फॉर यू हैव टू डू देम पिले दीज आर कॉल्ड द एडजेक्टिव्स एवं एडवर्ब मानकर डिग्रीज थाए ओके तो एठी इंग्लिश हमर तीन प्रकार डिग्री अच्छी पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री सो इन द फर्स्ट कॉलम पॉजिटिव डिग्री इन द सेकंड कॉलम कंपैरेटिव डिग्री एंड इन द थर्ड कॉलम सुपरलेटिव डिग्री इज गिवन फॉर एग्जांपल लाउड इट्स कंपैरेटिव फॉर्म इज लाउडर सुपरलेटिव फॉर्म इज लाउडेस्ट सेमती क्लियर क्लियरर क्लियरेस्ट सेमती बिग रो कौन हबो स्मॉल रो कौन हबो व्हाट इज द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फास्ट स्लो नाइस बैड फिर बैड टा मु लिखि देछि बैड ओर्स्ट कहीं कहलो कारण बैड रु तुमे बैडर बैडेस्ट करि परिबो नाही कहीं ना दैट इज एन इरेगुलर एडजेक्टिव जो गुड़िक रेगुलर एडजेक्टिव ताकू EREST स्ट्रक्चर बा मोर स्ट्रक्चर करा जाए किंतु देयर आर सम एडजेक्टिव्स दे आर इरेगुलर दे डोंट टेक द रूल्स एंड दे टेक कंप्लीटली न्यू वर्ड्स बैड बैडर बैडेस्ट हो पारिबनी
बैड मोर बैड बा मोस्ट बैड हो पार ना इरेगुलर गोटे एडजेक्टिव तेणु तार कंपेरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री कौन हम बैड वर्स वर्स्ट है अच्छा सो यू हैव टू कंप्लीट देम so they are the 3 degrees your positive degree comparative degree and superlative degree अच्छा पिले comparative degree हम कोठी यूज करिवा कि रे जेतले दुई जण भीतर कंपेयर करा जीवो मु लंबा मु ता ठारू लंबा सीमा स्वाति ठारू बेसी चालाक ना तो से जगह गुडी को जेतले हम करिबा हम कोन करिया कंपेरेटिव डिग्री यूज करिबा टॉल टॉलर इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट क्लेभर क्लेभरर आउ जी आम क्लास सबुठारु चालाक आम क्लास जे सबुठारु डेंगा लंबा पिलाटा ता पई कोन करिबा टॉलेस्ट ना क्लेभरेस्ट सीमा रीमा ठारु टॉल ताले सीमा इज टॉलर सीमा आम क्लास सबुठारु टॉल सी द टॉलेस्ट गर्ल ना तो सेमिति आमे समस्त सहित कंपेयर करला बेले सुपरलेटिव डिग्री एवं दुई जन भितर बा दुईटा एंटिटी भितर कंपेयर कले कंपेरेटिव डिग्री यूज करिबा सो ये वर्कशीट टाकू भी नहीं जाओ घरे करिवो कंप्लीट करिवो वर्कशीट नंबर 5 सी ए पैसेज इज देयर दैट इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर्स you have to read them and find out the nouns. Nouns are naming words. Rooster, crown, place, song, problem, jackal, way, king, they are the nouns. You have to make its plural. Nouns मानकर number अच्छी singular or plural. तो singular को हम plural करी परिबा rooster, roosters, crown, crowns. Others you have to do. सेमिति पिलार जेंडर अच्छी इंग्लिश में 4 प्रकार जेंडर अच्छी मास्कुलाइन बा मेल्स फेमिनाइन बा फीमेल्स कॉमन बोथ न्यूटर नाइदर मेल नॉर फीमेल किंग इज अ मेल तो इसका मास्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर इज क्वीन सो यू हैव टू डू व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ रूस्टर एंड जैकल ओके इंग्लिश में 3 प्रकार पर्सन अच्छी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एवं थर्ड पर्सन ओके पिले सो नाउन आमे पढ़िले नाउन पढ़िबा नंबर पढ़िबा पर्सन पढ़िबा जेंडर पढ़िबा नाउ टेक इट स्क्रीनशॉट नाउ वी शैल मूव टू वर्कशीट नंबर 6 सेम पैराग्राफ दिया जाइछि फाइंड आउट द एडजेक्टिव्स एंड राइट देयर डिग्रीज एंड ऑपोजिट्स ए पैराग्राफ रु आमे फाइंड आउट करबा जो गुडी का एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ओके बिग कौ रूस्टर बिग रूस्टर कौ रूस्टर हैंडसम रूस्टर ए हैंडसम बिग एगुड़े सब गोटे गोटे कौन एडजेक्टिव पिले रेगुलर आउ इरेगुलर अच्छी जो गुड़िक EREST बा मोर मोस्ट नियंती सेमान को आम रेगुलर कहबा जो गुड़िक कंप्लीटली नुआ फॉर्म नियंती सेमान को इरेगुलर्स कहबा जेमिति कि गुड गुड रु तो गुडर गुडेस्ट हो पारिबनी नहीं गुड बेटर बेस्ट सेमी तुम निजे करिवो हैंडसम किंतु हैंडसमर हो परिबनी हैंडसम मोर हैंडसम मोस्ट हैंडसम अच्छा तो एबे यू हैव टू डू एबे देखा ब्लू बॉक्स रा ऑपोजिट अछि व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ बिग स्मॉल सिमिलरली यू हैव टू राइट द ऑपोजिट ऑफ हैंडसम ब्यूटीफुल हाई गुड लाउड एटसेट्रा देन वर्कशीट नंबर 7 see there are some words these words when they are IE EE, EI, EA or O at the time they are spoken with a long sound. For example, ROOSTER आमे ताको रूस्टर पढ़ी परिबानी रूस्टर रिपीट फूल डुडुल फील फ्री रिसीव बिलीव like that long pronouncing words. Some other words are there in the blue box. Ceiling, relieve, tool, cool, keep, sheep. Take it screenshot. You will read it and practice it. That is your worksheet number 6. Now go for worksheet number 7. Vocabulary. Some new words are there in this paragraph. Nahi? Beautiful, handsome, problem, instead, cut, believe, behind, repent, never. So these words are new. How shall you remember them? Now first look, then cover, then write, then verify. That is the step to develop our
स्पेलिंग रूल्स तेणु स्पेलिंग को डेभलप करने आमको ये ट्रिकी मेथड को अप्लाई करने पड़ो तेणु प्रथम कौन करवा लुक भल भाव देखा से वर्डटा केमती लिखाई कभर करदबा तापर निजे लिखा तापर कभर को हटई देखा मैच करवा ठीक अच्छी ना ना जदि भूल थो करेक्शन करवा पिले टी हैंडसम वर्डटा देख लो से डीटा रेड कलर लिखाई कहीं कहल ना डीटा प्रोनाउंस हो ना आम ताको हैंडसम पढ़ुने हैंडसम 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 पढ़ुना से डी साइलेंट रही तले देख गोटे बॉक्स अच्छी पिले से बॉक्स रे सब डी साइलेंट अच्छी ताको घरे प्रैक्टिस करिवो वेडनेसडे सैंडविच हैंडसम हैंडकरचीफ एज प्लेज गैजेट ब्रिज प्रैक्टिस करवा ताको है ना दैट इज वर्कशीट नंबर 8 नाउ सम वर्ड्स आर जम्बल्ड स्क्रैम्बल्ड यू हैव टू अरेंज क्लूज आर गिवन तुमको हिंट्स दिया है पिले क्लू दिया जाए DRE 3 letter word starting with color कहलो कौन हम yes that is very easy you can do that is red similarly others you have to do okay it is your homework take it screenshot you will do it now rearrange the sentences the jackal saw the rooster singing every day number 2 there was a big handsome rooster he suggested the rooster to sing closing his eyes. He wanted to make his song still better. He looked and felt like a king. But how to do that was his problem. These 6 sentences are there, but they are jumbled. You have to rearrange them. The right box is your answer box. You have to arrange them. I won't do it. It is your worksheet. Worksheet number 10. So, Pile, lastly, your comprehension questions. They are your known questions. Who are there in the story? The jackal and the rooster are there in the story. What was the rooster like? Rooster was like a king because he was having big and handsome crown that was red, beautiful. What did he do early in the morning? The rooster sang non-stop cock-a-doodle-doo every day, sitting on a high place. What did he know? The rooster knew that his song was much better than the songs of the other roosters in his locality. Is it true that the rooster song was better than the songs of the other roosters? No. No, it was not. Achha, what did it want its songs to be? The rooster wanted its song to be sweeter, louder and clearer. Did it know how to do this? No. The rooster did not know how to do this because that was his problem. The jackal thought the rooster would fly away if he tried to catch it. Why? Because all small birds and animals fear to him and try to escape as it is a hunting animal of small birds and animals. And the rest questions you have to practice. Okay. So now children, thank you all watching this video. Enjoy it. In next class we shall go for the second part of the chapter. Have a nice day. Thank you.